इसके साथ में मसाला चाय बना रहे हैं। इसमें पानी चढ़ाया, अब इसमें थोड़ा सा चाय, अदरक, इलायची और थोड़ा सा लौंग डाल के बाद में इसमें दूध में मिक्स करेंगे। तो मसाला चाय जो घर में बनती है वो बना रहा हूँ, ऑथेंटिक, और ऐसे मौसम के लिए। रिम झिम बारिश और पकोड़ा और चाय, कम ऑन। दिस इज़ तौहीद। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और बाहर बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो थोड़ा सा अच्छा भी लगे और इस मौसम के हिसाब से। तो आज मैं मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बना रहा हूँ, जो मेरे घर में अवेलेबल है। थोड़ी सी सब्ज़ी थी जिसमें कि स्पिनच है, पोटैटो है, ऑनियन है, गार्लिक है, ग्रीन चिली है। इसके साथ में आज वेजिटेबल पकौड़ा बना रहा हूँ, मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बना रहा हूँ, जो मेरे पास अवेलेबल था फ्रिज में। तो मैंने वो फाइन चॉप किया है इसको, बेसन और थोड़ा सा सॉल्ट, पेपर और जीरा और भुना हुआ जीरा मिलाऊंगा, और उस थोड़ी बार रखने के बाद में फिर इसको फ्राई करूँगा। और वी कैन एंजॉय इट विथ मसाला चाय, वॉट एवर यू लाइक, ब्लैक चाय, green tea or whatever, but masala chai is a favorite all over India. Oh, good, excellent. Now we're going to start vegetable pakoda. Oil is hot, it's medium fire, not very hot, otherwise it's burn out. So start pakoda slowly.
मीडियम फ्राई। बहुत ज़्यादा गर्म में डाल देंगे तो फिर ये अच्छे रह जाएंगे। This is crispy vegetable pakoda and masala chai is ready over there. So let's enjoy. मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है।